Good evening, everyone. So everyone, please mute yourself. Those who have unmuted, please mute your mic. So once again, good evening to all. Today we will discuss the last year जो तुम्हारो GS question आसला जो dynamic question आसला ताको हमें discuss करिबा and तो जहाँ भी issues अच्छे हमें सब detail discuss करिबा after the lesson. I will talk to each one of you if you want to ask me anything, or let's say you are having some sort of the queries. जहाँ भी अच्छी we will discuss. Good evening, Subrat. So let's begin the lesson. Join fast. जो मैंने join करना join fast कर दो. ठीक जल्दी join कर दो. Let's say. So now we will come to our lesson. Okay. So first topic थिला अफगानिस्तान ऊपर जो तमरो topic थिला हमें देखिबा कि लेट्स से कोई तुमको लिखिया पड़ो केते वर्ड्स लिखिया थिला हमको दरकार थिला कोन ना हमर केमती डायनामिक क्वेश्चन काहे कि एंड को जिंसो को हमें कवर करले हे परिबो. So it's about what 150 words रे तुमको कवर करे थिला तालिबान इशू थिला. The first question आके जानियर अछि कि how to predict the dynamic question. Let's say this question was asked the last time. This question was asked in OCS mains. The question होची काहे कि पचातला because it was in news. जेहेतु न्यूज रे थिला सेथि पचरा थिला. Then आउ कोथि पे थिला इटा न्यूज because of the neighboring country. As it's what neighboring country to India, तो तेणु करिके पचार रहितला. तेणु दीटा रीजन जदि हमें देखबा रीजन कोन पचारिबो सेटा जानियो बहुत जरूरी. तपस्वी कुड यू प्लीज जो मन वीडियो ऑडियो किछि दरकार नहीं है ना अनम्यूट करके रखियो. सो दैट मीन्स हमें देखिबा कि एके क्वेश्चन काहे की पचारा जाउथला देन आंसर हमें देखिबा. So that कोन हमें this time it would be also easy to predict the question. क्या on the basis of let's say we will make the question GS पे हमें क्वेश्चन करिबा. मुरली प्रसाद कुड यू प्लीज वीडियो को ऑफ कर दियो तुमर किसी वीडियो नेसेसरी नहीं. ओके नाउ क्वेश्चन है काहे की क्वेश्चन असला फर्स्ट बिकॉज दैट वाज इन न्यूज. द सेकंड इज हियर नेबरहुड. दैट मीन्स अफगानिस्तान हमर गोटे नेबर कंट्री. सो बीइंग ए नेबर कंट्री हमर जानछ नेबरहुड फास्ट पॉलिसी अछि. So as we were running the neighborhood fast policy, आम नेबर उपरे जहाँ भी impact पड़िबो, आमर circumstances रे जहाँ भी change हबो, that will have impact on India, and that's why. So that will also will have what repercussion or impact on the India as well. तेणु करके जदि आम देखा कहीं पचार जाइए क्वेश्चन तापर मुझे तापर आम आंसर को जीवा. तेणु कर पचार दीटा रीजन मुझे तुमको कही आज द लेटेस्ट डेवलपमेंट दैट वाज हैपेंड देयर. तो डेवलपमेंट जदि हमें देखा कि लेटेस्ट डेवलपमेंट अरे देख ए तुम मैंने जॉइन करुच मुझे 5 मिनिट्स देती जॉइन करने. सो जिते भी टाइम दि जाऊ विदिन 5 to 10 मिनिट्स यू हैव टू जॉइन एवरीवन. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन थिला कि दैट वाज द डेवलपमेंट. कौन डेवलपमेंट थिला ना आम कहला कि तालिबान आसी जीवो है ना तालिबान. सो जेहेतु गवर्नमेंट चेंज हो गला ना नेबर कंट्री ऑब्वियसली दैट विल हैव इंपैक्ट ऑन इंडिया एज वेल बिकॉज हमर इंटरनेशनल रिलेशन ऊपर इंपैक्ट आसीबो है ना. तो ये सब ऊपर हमर कोन आसीबो इंपैक्ट पड़िबो. तेणु करिके हमको कोन करे पचारा जाइतला एक क्वेश्चन आसीतला एंड लेट्स दैट्स व्हाई क्वेश्चन पचाइतला. सेमिति ये क्वेश्चन को हमें देखिबा ये क्वेश्चन रो सिग्निफिकेंस काहे की पचार देतला कने काहे की जदि हमें जानिबा सो दैट हमें प्रेडिक्ट करि परिबा. एंड प्रेडिक्शन इज that is why intelligence preparation, when we say intelligent preparation, that means what how much you are predicting, how much you are calculating that these things are going to be asked. So that is we need to एमती ना कि खाली एमती रट्टा मारुथु आमे बुझि पड़छ नहीं. hope you are getting me and all of you are मतलब you have cleared the pre, that means you are mature enough. Okay, I believe so. दैट मीन्स हम जे तालिबान इशू कहले मु तुमको दीटा लॉजिक देखले सेथि पई ना क्वेश्चन केमिति आसी जिते व्हाट आर द इम्प्लिकेशन. जेते बेले तुमको क्वेश्चन आसे फास्ट ताको सर्कल कर दो आंसर राइटिंग रो फॉर्मेट कोन इम्प्लिकेशन कहार तालिबान रो. तो मु हमर कीवर्ड कोन माय आंसर शुड होवर अराउंड द कीवर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. दैट मीन्स इम्प्लिकेशन तालिबान एंड आमे केबा रीजनल सिक्योरिटी. So this is the with reference to India. That means keyword of this particular question रो जदि मु देखबी तालिबान जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन कला तार इम्प्लिकेशन इंडिया रो रीजनल सिक्योरिटी ऊपर कोन पड़िबो. सो आमर जो क्वेश्चन आंसर जहाँ भी रहिबो दैट मीन्स योर आंसर शुड होवर अराउंड दिस कीवर्ड. तो तुरंत क्वेश्चन रे कोन करिवो कीवर्ड्स को
अंडरलाइन करदो और सर्कल करदो सो दैट आमर आंसर है बाहर को न जावा दरकार एंड स्टिक टू द वर्ड एज वेल ना तुम कह सर केते वर्ड लिखा दरकार जदि 150 वर्ड लिखाई यू कैन मूव अप टू 200 वर्ड्स बिकज 50 20 25 50 वर्ड 200 न भी हो 20 वर्ड्स टू 30 वर्ड्स मैक्सिमम वेरिएबल हो पार तुम कह आम 200 से लिखिद किसी बेनिफिट हेनी एपाई कारण तुम 200 जो 50 वर्ड्स एक्सट्रा लिखुच कौटि ना कौटि गोटे क्वेश्चन तुम मिस हो आगू को जाकि तेणुक स्टिक टू द वर्ड रही चेष्टा कर एंड जदि तुम इफ यू आर हैविंग गुड हैंड स्पीड यू कैन राइट 200 वर्ड्स लिखिपर ओके तो स्ट्रेटेजी दैट मीन्स दैट वुड बी द आम कह सिनारियो तो ये थे आमर केमी क्वेश्चन को तुरंत सर्कल करदे एमती कीवर्ड जिते तुम टेस्ट सीरीज दौच जो टेस्ट सीरीज आमर दबू आमर जो जीएस आज जमी शेड्यूल थी तुम जीएस टेस्ट गोटे आम कंडक्ट कर सारीचु तो तुरंत हाँ जदिव आज क्वेश्चन एत डायनामिकली फॉर्म करा जाए जानी शुणी इनिशियल स्टेज रे तुमको एमती दिखाई तो कीवर्ड को मुझे सर्कल करदेली एवं मत आंसर लिखार अच्छे ना फास्ट जदि मुझे देखी कौन वेदर आई कैन ऐड द मैप बिल्कुल मुझे ऐड मैप कर इंडिया मैप ड्र करके अफगानिस्तान देखी पार 106 किलोमीटर बॉर्डर लाइन शेयर करे अफगानिस्तान दैट मीन्स पोटेंशियल थ्रेट अच्छी टू द पॉक रीजन दैट मीन्स दैट 106 जो तुम किलोमीटर बॉर्डर शेयर करुच्ची अफगानिस्तान कौटी पॉक रीजन सहित शेयर कर दैट इज द पार्ट ऑफ इंडिया जाको कारण तुम कह सर से पाकिस्तान रे बट देख आमर डिप्लोमेसी एमती चले वी कांट डिनाई कि दिस इज नॉट आवर पार्ट इंडियाज गवर्नमेंट स्टैंड ऑलवेज पॉक इज आवर दैट इज व्हाई वी आर शेयरिंग बॉर्डर विथ अफगानिस्तान तो हमको किसी फैक्ट्स आगे खोजिया पड़ो फैक्ट्स कौन फैक्ट्स देन आम आसवा एनालिसिस पार्ट को इम्प्लिकेशन पार्ट को आसवा तो फास्ट आम लिखिदेव कि अफगानिस्तान व्हिच इज ए मेंबर ऑफ व्हाट आम कहबा एससीओ रो मेंबर अच्छी अफगानिस्तान सार्क रो मेंबर अच्छी अफगानिस्तान also the closest neighbor of India. Just a minute. Just a minute. मो ठीक से लिखी दूसरी तुमको आउ गोटे मो कौन करी व्हाइट पेज गोटे नहीं जाऊँगी है ना गोटे व्हाइट पेज नौ जस्ट मिनट टिके लेट्स हैव पेशेंस white page is coming to all any one of you could you please just inform white page is coming okay thank you ना कहते तो दैट मीन्स आम देखी कि क्वेश्चन को मुझे आउ थोड़ी जी क्वेश्चन कौन थिला सो क्वेश्चन थिला कि अफगानिस्तान दैट मीन्स आम देख आगे जोटा मुझे कही कि आगे सर्कल करदे जो वर्ड अच्छी स्पेशल वर्ड को आम सर्कल करते आर ऊपर आंसर रते वर्ड 200 वर्ड्स जो लिखिपर बट आम आंसर बाहर को जीवा ना तो तुरंत मुझे कौन करी इंट्रोडक्शन मेन पार्ट एंड कंक्लूजन आम पार्ट केमती लिखा देखा सो लेट्स से दैट मीन्स आम लिख तो तुम इंट्रोडक्शन में कौन लिख कि अफगानिस्तान रिसेंटली तालिबान व्हाट टेकन ओवर द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान तो तालिबान इज नाउ स्टार्टेड रूलिंग दैट मीन्स बाय अगस्ट जदि आम देखा बाय 2021 जदि आम सेप्टेम्बर सुधा जदि देखा नाउ वी यूएसए विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान एंड तालिबान टुक ओवर द गवर्नमेंट or formed the government तो यहाँ आमको इंट्रोडक्शन कारण इंट्रोडक्शन दी प्रकार हो पार ईदर आई विल स्टार्ट कि अफगानिस्तान इज द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ इंडिया विच इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ एससीओ एंड सार्क मेंबर विच शेयर 106 किलोमीटर बॉर्डर लाइन with India in the POC region. तुम एमिति इंट्रोडक्शन स्टार्ट करी पारिबो और you can start the introduction recently the US government the US has withdrawn its force from the Afghanistan and the Taliban has taken over the Afghanistan and the new government is formed in form of the Taliban. एमिति भी हमें इंट्रोडक्शन स्टार्ट करी पारिबा मु कहूँ इंट्रोडक्शन ईदर तुम बॉर्डर लाइन रू स्टार्ट करें जहाँ को बेसिक इंट्रोडक्शन कहूँ और जदि तुम डायनामिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने चाहूँ देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द करेंट अफेयर पार्ट जोटा मु कहली कि आज द यूएसए व्हाट एक मिनट जदि आम कह यूएसए विड्रॉल 2021 बाय सेप्टेम्बर एंड न्यू गवर्नमेंट आम कह न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन है ना तो ये इंट्रोडक्शन है देन वी विल कम टू द इम्प्लिकेशन पार्ट नेक्स्ट वी विल कम टू द इम्प्लिकेशन पार्ट ना से कोई रीजनल सिक्योरिटी उपरे
तो दैट मीन्स तुम आंसर रे एसयू रिफ्लेक्ट हवा दरकार, तुम आंसर रे सार्क रिफ्लेक्ट हवा दरकार, तुम आंसर रे बॉर्डर एरिया रिफ्लेक्ट हवा दरकार। ओके, यूएसए जो विड्रॉल करिछि ये भी हम आंसर रे रहिबा दरकार। ये सबू जो की वर्ड सब रिफ्लेक्ट हवा दरकार। न्यू गवर्नमेंट आसिला, अच्छा ता पूर्वरु तालिबान केबे जाय रूल करूथिला 1991 टू 2001 जाए तालिबान रूल करथिला। देन यूएस रे एंट्री मारिला, कारण तुम समस्ते जानिଛ 2001 रे कोन हिथिला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऊपर अटैक हैला एंड यूएसए अफगानिस्तान रे एंट्री मारला। सो सिंस 2001 टू 21 ये जो 20 इयर्स रूल किए कला यूएसए। नाउ गवर्नमेंट चेंज हो गला। एबे हमें आसबा ये इंट्रोडक्शन पार्ट थिला। सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट। ना इम्प्लिकेशन पार्ट को हमें देखिबा। इम्प्लिकेशन पार्ट, इम्प्लिकेशन पार्ट रे हमें कौन लिखिबा, से कहिछि इम्प्लिकेशन पार्ट को अगेन क्वेश्चन कस, से कहिछि रीजनल सिक्योरिटी, कौन कहिछि से रीजनल सिक्योरिटी। एबे हमें आसीबे हमर क्वेश्चन को आंसर को आसीबा हमें ना रीजनल सिक्योरिटी क्वेश्चन थिला कोन, रीजनल सिक्योरिटी को केमिति इंपैक्ट पकोछि। होप एवरीबॉडी इज नाउ गेटिंग द एक्सेस, समस्त को एक्सेसिबिलिटी मिल जाइछि। द क्वेश्चन रो जदि रीजनल सिक्योरिटी को मु देखिबी केमिति हम डिस्कस करूचे। देखो प्रथम कथा हैला कि तालिबान एंड अल कायदा, ध्यान से मन को कथा, तालिबान एंड अल कायदा दे आर हैविंग ए गुड बॉन्डिंग। तो जदि हम देखिबा तालिबान एंड अल कायदा ये दी जनकर गुड बॉन्डिंग अच्छी एंड अल कायदा इज हैविंग प्रेजेंस इन पॉक रीजन Pakistan as well, as the Al Qaeda is having presence in the POC region and POC region is also having militant माने हमें कहबा एठी बहुत सारा militant रहउछंती जो मन की state sponsored, जो मन की state sponsored कहले state who is state पाकिस्तान, स्टेट स्पॉन्सर्ड कहले स्टेट फंडिंग करूची ताकू। दैट मीन्स हमें कहबा पॉक रीजन रे जो भी टेररिस्ट बा टेररिज्म एक्टिविटीज होची ऑल द टेररिस्ट ग्रुप जेते भी पॉक रे रहउची दे विल नाउ गेट व्हाट फंडिंग। तो कोठी ना कोठी फंडिंग पाइबार चांस अछि फ्रॉम द तालिबान। और पाकिस्तान एथरे भारी खुश, कारण पाकिस्तान चाहूला तांको सपोर्ट करुवा ग्रुप अफगानिस्तान को रूल करू एंड तालिबान गॉट द पावर। तेणु करके अल कायदा जोटा कि पाकिस्तान रे प्रेजेंस अछि दे आर आल्सो हैप्पी, दे आर आल्सो हैप्पी। सो व्हाट विल हैव इम्प्लिकेशन ऑन इंडिया ना, इंडिया रे जदि हम इम्प्लिकेशन देखुचे ना हमको कोन मिलिबो, एक जस्ट मिनट, इंडिया को कोन मिलिबो, दैट मींस हमको इंडिया रे जो टेररिस्ट ग्रुप सब अछि दे विल गेट फंड। फास्ट इम्प्लिकेशन टेरर फंडिंग इंडिया रे बढ़िबो, ध्यान से सुनिबो ना। व्हाट बिकॉज ऑफ द तालिबान अल कायदा अफगानिस्तान रे जो गवर्नमेंट चेंज हैला रीजनल सिक्योरिटी कोन हबो, टेररिस्ट मान को फंडिंग बढ़ी जिवो। सो टेरर फंडिंग ये इंडिया रे इंक्रीज करिवो। देन टेररिज्म, टेररिज्म इन स्पेशली जे एंड के एठी बढ़िबो। देन आउ कोन रहिबो ना हमको ड्रग्स, ड्रग्स बढ़िबो कोठी पंजाब, पंजाब हरियाणा जेएनके एठी ड्रग्स रो कोन हरिजबो ना, ड्रग्स रो कोन रहबो इंपोर्ट अधिक हबो। सो दैट से माने चाइबे यूथ मानकू जो इंडियन यूथ मानकू डिरेल करिया पई, इंडियन यूथ मानकू कोन करबो डिरेल करिया पई, इंडियन यूथ मानकू खत्म करिया पई से माने चाइबे सेति पई ड्रग्स राइसबो। तो ड्रग्स कोन पे आसबो त माने दुईटा जानचो, गोटे होचे गोल्डन ट्रायंगल आ गोटे होचे गोल्डन क्रिसेंट। ताले ये कोथरे आसुची गोल्डन क्रिसेंट आसुची अफगानिस्तान एंड व्हाट पाकिस्तान इरान एंड व्हाट ईरान, ये तो समस्ते जानिच है ना। सेपटे रहिबो किए लाओस कंबोडिया म्यांमार ये सब रहिबो। तो ये तुम्हारा गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट। तो ये रीजन रो कोन रहबो ड्रग्स इंडिया को आसबो, खास करके पंजाब आ पंजाब रे ड्रग्स रो मेना समस्ते जानिचो न्यूज रे बारंबार रहे। दैट मींस हमको ये गोटे सिक्योरिटी चैलेंज हे जाउची, टेरर फंडिंग गोटे चैलेंज हे जाउची, ये गोटे चैलेंज। देन एक्टिविटीज टेररिज्म एक्टिविटीज ये बढ़ी जो इंडियन, चाहे से बॉर्डर रीजन कथा नहीं जो, चाहे से जेएन कथा नहीं जो, तो कोठी ना कोठी बढ़िबो। देन हमें फंडिंग बढ़ुची, ये सब हमको कोन देखा जिवो इम्प्लिकेशन। सो दैट जो रीजनल स्टेबिलिटी थिला जेहेतु यूएसए थिला एंड यूएसए इज आवर क्लोज अलाई, सबुठ इंपोर्टेंट होची हमरो क्लोज अलाई।
तो जेहेतु ये गोटे क्लोज अलाई थिला तो पाकिस्तान कोठी ना कोठी गोटे डोमिनेंट हेकी रहउथिला ना पाकिस्तान इज गेटिंग कॉन्फिडेंट ये कॉन्फिडेंट हेगला द पाक वुड बी मोर कॉन्फिडेंट आउट टेरर फंडिंग टेररिज्म बॉर्डर टेंशन ये सबू एबे इंडियन बॉर्डर रे पड़िबो दैट इज व्हाई ओवरऑल द रीजनल स्टेबिलिटी वुड बी डिस्टर्ब्ड अच्छा लिंक करी होची आराम से सब समस्त लिंक करी होची जहाँ जहाँ टॉपिक मु कहूँ लिंक करी होची एवरीवन हे परिबो है ना फाइन तो दैट मीन्स आमे देखले कोन इम्प्लिकेशन आमे देखिदेले सेथिपे पंजाब गवर्नमेंट देखो फ्रॉम टाइम टू टाइम बहुत सारा एमती जेमती यूथ मान को केमती ड्रग्स फ्री करा जो म्यूट कर दिया समस्ते केमती ड्रग्स फ्री करा जिवो टेरर फंडिंग केमती करा जिवो इवन समस्ते म्यूट कर दियो एफसीआरए समस्ते जानचो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एथरे कोन कहजे जो हमर टेरर फंडिंग अच्छी ना से कौन करा जो टेरर फंडिंग को चेक करा जाए है ना एफसीआरए तो समझते जानचो इन 2019 है ना ताको अमेंड करा जाइछि एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट आकु कोन ए टेरर फंडिंग को चेक करिया पे ठीक अछि सो ये थिला हमर फर्स्ट क्वेश्चन रो डिमांड थिला एथरे आ कहार किछि क्वेश्चन करियर छै एनीवन जार जार क्वेश्चन अछि मते पचा दियो है ना ये थिला हमें देखले इम्प्लिकेशन तो फास्ट मु देखली इंट्रोडक्शन रे लिखली कोन ना लेट से तालिबान रो लिटिल बिट हिस्ट्री दे देली जो 10 वर्ष से माने शासन करथिले देन यूएसए केमते रूल कले म्यूट करो यार के ऑन म्यूट अछि के दुर्योधन यू आर ऑन म्यूट एक मिनट म्यूट करो हां डन थैंक यू सो दैट मीन्स हमें इंट्रोडक्शन पार्ट को देखले एंड हमारा इम्प्लिकेशन पार्ट को देखले जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन थिला हमें ताको फुलफिल कले so this is why and map add करिवो कोन करिवो you have to add the map एठी मैप ऐड करिके देखिबो को बॉर्डर तमरो टच करूची टेन एवरीवन ये थिला फर्स्ट क्वेश्चन आराम से तमरो 10 मार्क्स हे जबे थी जदि हम देखिबा है ना इंट्रोडक्शन भी काफी दिया हिची बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया हिची एंड मोर डिफरेंट एंगल रु चाहे से ड्रग्स कथा नियो चाहे से टेरर फंडिंग कथा नियो चाहे से यूथ मान को डिरेल करिबा हिचो चाहे से टेररिज्म एक्टिविटीज हिचो किबा पाकिस्तान रो जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन पॉक रीजन अछि मान को कॉन्फिडेंस कथा निचो और पाकिस्तान आज ए होल हम केबा दे आर गेटिंग आल्सो द पाकिस्तान जो रेंजर कथा निचो Pakistan जो ranger they are also getting confidence because USA has withdrawal and they are now the government those who are running the government in the Afghanistan they are the supporter of Pakistan so obviously now we have to fight the war from the two front एबे हमें देखो USA थिला तो गोटे फ्रंट हमरो सिक्योर थिला now Pakistan Afghanistan and China it's a what हमें कहबा 2.5 fronts it's a difficult for India तो ऑब्वियसली हमको एबे कोन हमर जो रीजनल स्टेबिलिटी कोठा कोठे डिस्टर्ब होको लागि छि अंत सेति पई हमको ये थिला चैलेंजिंग इशू नाउ आई विल कम टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द लास्ट ईयर ओपीएससी सो सेकंड क्वेश्चन तमरो थिला कि इंडियन डायस्पोरा कैन प्रोवाइड रिक्विजिट स्ट्रेटेजिक इंपल्स टू अनलॉक इंडियन पोटेंशियल एज अ ग्लोबल पावर ना आगे हां वेरी गुड हम्म हम्म हाँ हाँ हम्म देखो हम्म देखो क्वेश्चन उठुची प्रथम कथा तो मु डिबेट करिया पे जाउनी पूरा रिलेशन को हमर क्वेश्चन रो हां मु एक मिनट हां मु कहू मु कहि सब आंसर देबी देखो जोटा तमे पचारलो प्रथम कथा सेटा क्वेश्चन रो डिमांड नाही तेणु करी मु डिस्कस करिनी एबे तमरो सेटा हां सुन एक मिनट तमरो डिमांड अछि मु फुलफिल करबो नो डाउट एबे क्वेश्चन उठुची जदि क्वेश्चन तमे कहबो सर वेदर वी शुड मेंटेन कॉर्डियल रिलेशन विथ तालिबान और नॉट ये तो question is now whether we should maintain the relation with बिल्कुल my question answer would be yes we have to maintain cordial relation जदि question एटा को बुलाई दिया हबो now the Taliban has taken over the Afghanistan whether we should maintain the same relation which was existed just before August or September 2021 same level should we maintain or not
ये रहिबो क्वेश्चन जदि तुम क्वेश्चन को मुझे गोटे क्वेश्चन रे फ्रेम कर देबी लेट्स से ताले आंसर कोन हबो नाउ आई एम गिविंग माय आंसर ओके लेट्स से तो क्वेश्चन आंसर कोन हबो फर्स्ट क्वेश्चन इंडिया हैज इन्वेस्टेड इन मेडिकल इंडिया इवेन तांकर पार्लियामेंट को बनैछि इंडिया इवेन तांकर रोड करूछि सलमा डैम कथा जानिछ रेल कथा जानिछ है ना जाकू गारलैंड प्रोजेक्ट भी कह जो रोड अच्छी ताकू कह गारलैंड प्रोजेक्ट तो इंडिया मेडिकल में इन्वेस्ट करुच्ची इवेन अफगानिस्तान रो जो स्टूडेंट्स अच्छी से आम स्कॉलरशिप रे इंडिया रे पढ़िया भी दौचे एजुकेशन हाँ कि नहीं आउ कौन करोचे अफगानिस्तान रो जो पुलिस अच्छी बा मिलिट आमे तांकर जो सोल्जर मु तो कहबी सोल्जर तांकू इंडिया रे ट्रेनिंग दिया जाउची तांकू इक्विपमेंट दिया जाइची जेमती तमरो हेलिकॉप्टर लड़ुआ हेलिकॉप्टर है जो जैकेट है जो AK-47 राइफल है जो ये सब भी इंडिया जो मिलिटेंट इक्विपमेंट्स अच्छी ताकू भी इंडिया देइची ताले इंडिया ये सब करूथला कोन पई मो कहया कथा इंडिया मेडिकल करूथला इंडिया पार्लियामेंट बनैची रोड गारलैंड प्रोजेक्ट करिची सलमा डैम करिची रेलवे करूची स्टूडेंट मानकू स्कॉलरशिप देउची एजुकेशन दउची देन कोन कहले एटा तमरो कोन थला हाँ इक्विपमेंट मिलिटरी इक्विपमेंट दौची चाहे से चीता हेलिकॉप्टर नहीं छो एते सब कहीं करूथला बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ प्रॉस्पेरिटी बिकॉज ऑफ व्हाट प्रॉस्पेरिटी कि अफगानिस्तान रे प्रॉस्पेरिटी आसु ताले तुमको सर ये सब मिलिबो कोन कारण अफगानिस्तान रे जदी प्रॉस्पेरिटी आसीबो सेठी जदी डेमोक्रेसी आसी जिवो ताले तालिबान रहिबोनी ताले टेरर ग्रुप सब खत्म हो जिवो डेमोक्रेसी आसी जिवो सो आमर टार्गेट थला यूएसए सहित मिसिकी डेमोक्रेसी आनिबा बिकॉज इंडिया को थरे बिलीव करे डेमोक्रेसी रे यूएसए डेमोक्रेसी रे बिलीव करे आमे टेररिज्म रे बिलीव करूनु कि सब तेणु आमर टार्गेट थला अफगानिस्तान रे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जहाँ भी हो बट आमर टार्गेट हैला नहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो ही पारिलानी जेते दिन गवर्नमेंट चलीला चला एला एबे करबा कोन ना एबे जदि तमे जोटा एबे तम क्वेश्चन को आसीबि तो ये थिला हमर कंट्रीब्यूशन अफगानिस्तान बिल्डिंग रे द बिल्डिंग ऑफ जदि तुम कहबो व्हाट आर द लेट्स से इंडिया हैज डन फॉर द बिल्डिंग ऑफ अफगानिस्तान बाय डेमोक्रेसी को एबे ये सब हमें करूथले कि ताकि डेमोक्रेसी बंचित हो अफगानिस्तान रे बट ही पारिलानी अनफॉर्चुनेटली तालिबान हैज टेकन ओवर द गवर्नमेंट ना एबे हमें कोन करबा ना व्हाट नेक्स्ट तुम कह व्हाट नेक्स्ट ताले गवर्नमेंट नेक्स्ट कोन करिवो नेक्स्ट किछि ऑप्शन नहीं यू हैव टू मेंटेन द कॉर्डियल रिलेशन तुम कह सर कौन कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करने बाध्य यू आर बाउंड आउ किसी चॉइस नहीं तुमको सर कौन जदि न करिवो से माने कौन हो आउरी राडिकल हो इंडिया विरुद्ध रे स्टेप नेबे टेरर फंडिंग आउरी करिवे आउरी टेरर स्पॉन्सर्ड करिवे पाकिस्तान आउरी खुशी हो तेणु करिकी जहाँ भी हो वी नीड टू मेंटेन ए गुड डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करिकी तालिबान को आम सपोर्ट रे रखिया को पड़िबो सो दैट टेरर फंडिंग न हो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन न हो रेंजर माने जो पाकिस्तान रेंजर अच्छी से माने कॉन्फिडेंट न हो तेणु करके डिप्लोमेसी मेंटेन करिया पड़िबो बिकॉज से अफगानिस्तान भासी जाऊ ना मोर कौन है डेमोक्रेसी न आसु अफगानिस्तान रे आई नीड माई बेनिफिट इंडिया रो बेनिफिट हवा दरकार तुम डेमोक्रेसी न आसु तुम मरुन डेली 100 लोक मोर कौन हो ना बुझा पड़ोनी बुझीपार तेणु आमर जो नेशनल इंटरेस्ट अच्छी वी हैव टू फोकस ऑन नेशनल इंटरेस्ट रादर देन द बिल्डिंग ऑफ अफगानिस्तान that would be my conclusion because when there is national interest if my or I as the Indian citizen having any sort of the interest in Afghanistan then I will invest then I will do everything is fair in the law and war समस्ते जानिछो so obviously I will go and support the Taliban government मु कहबी भाई तमे जे जा करूछो करो आमर स्टेबिलिटी दरकार खत्म डन एवरीवन वेलकम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा इंडियन डायस्पोरा तो ओब्वियसली तुम मानक सिलेबस मु शेयर कर देइथिली एंड पुरुषोत्तम सर भी शेयर करथिले अच्छा जो माने भी दोज हु आर फीलिंग इनसिक्योर ना कि वेदर दे विल कवर और नॉट सिलेबस I will promise you definitely we together I Purushottam sir and Laisa we will cover obviously 2-3 days एथिपे टाइम लागुतला because to maintain the schedule and we are also waiting कि हाँ केते पिला join करूची कोन आमे ताकू तके schedule करे पे टिके टाइम लागो so don't worry for that okay we will definitely हमर जेमिति तुमको आज आंसर डिस्कस करूची सेमिति सेम इंटेंसिटी रो कवर करै देबो है ना सेथरे हमें किछि भी ढिला करिबोनु हां ये मूव फॉरवर्ड ये या very good evening yeah
So see, the benefit is that we will talk it later. Now first let me go through the question. We will talk about on that after the this. Okay. So have patience. Okay. That's it. Now comes to the Indian diaspora. So question ଅଛି କ'ଣ question ଆଗେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କଥା କହିଥିଲି ଆଗେ word କୁ circle କରିବ. The question is Indian diaspora can provide requisite condition. Now see the requisite condition. What that is the requisite strategic impulse to unlock the Indian potential as a global power. Now question पढ़िला बेले तुमको कौन लगुची question that means your answer should hover around the Indian diaspora तारो role कौन to make India as a global power. This is the keyword. Now that means जब डिस्कस करवा कौन होची दैट मीन्स आमर से मुझे आंसर राइटिंग आर्ट दिस इज द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग सो दैट कौन हम ना तुम होप नाउ यू वुड नॉट होवर हियर एंड देयर कि व्हाट आई हैव टू राइट व्हाट इज रिक्वायर्ड which thing is not required. So when you circle the word that means you are also but closing yourself into this and stick to the point. That is why I always insist say whenever you are getting the question fast before writing just pause yourself and circle the word which are the keywords and what you have to write what you don't. These are the things necessary, then start your writing. Okay, only few seconds you have to pause and collect the things, brainstorm karo kono darkar kota demand karuchi kono. Now comes to the question. Now say tame jemti tame ebe कहले मते कि $100 billion ebe collect करिछि. Now again I will comes to the introduction part. Introduction you can write in a two ways. Either you can write the introduction from the static point of view or from the current point of view. For example, ମୁଁ କହିବି ଯେମିତି ତମେ କହିଲ କି sir 100 billion. So I can also start what introduction from there. कि recently the India is the world sole country which has achieved at least 100 billion foreign remittance. Is the only and the largest country in the world to get the highest remittance. एमिति ଆମେ start କରିପାରିବା. Okay, or India is having world second largest diaspora after the China and the most strongest diaspora among all. कारण most strongest एथिपाई कहूची because दुनिया रे जेते CEO India's maximum तेणु करी मु कहबी most strongest diaspora and one of the largest. Let's say हमको fact मने पड़ुनी कि whether India is largest or the second largest. Just write like one of the largest or the major diaspora around the world. कौन ना every 16% दुनिया रे प्रत्येक 16 जनरु दुनिया रे जने लोक पा इंडिया रो है ना every out of every 16% in the world there is one Indian. तेणु करके जो देश जीव दुनिया रे इंडिया रो डायस्पोरा अच्छी एथर किसी डाउट नहीं. ये होची हम पे किसी डेटा दरकार डेटा एंड फैक्ट्स सर दिस डेटा यू कैन राइट दिस डेटा यू कैन राइट तो एमती डेटा स्टार्ट करबो. नाउ से कुछ इंडियन डायस्पोरा दैट मींस यू हैव टू राइट द इंडियन डायस्पोरा. लेट्स से मोर देन व्हाट आई वुड से मते तो मने पड़ोनी लगभग 20 लाख इंडियन रोचंती यूएसए रे लगभग आई मे बी रॉन्ग 20 लाख इंडियन रोचंती खाली यूएसए रे लगभग 5 लाख रोचंती है ना ऑस्ट्रेलिया जी देख मोर देन 5 लाख रोचंती कनाडा ब्रिटेन बुझिपारछ फ्रांस तो न्यूजीलैंड ए सब देश रे हमरो देखिबो इंडियन डायस्पोरा बहुत सारा रोचंती. तो दैट मींस ए भले किछि डेटा हमको we have to put facts and data so that to substantiate your answer. Data and facts is very necessary because mu kahibi Gandhi bhalo thile are bhalo thile prove karo na. When you are saying you are having one of the strongest diaspora you have to prove putting the data like this one ke out of every 16% in the world of the people in the world है ना there is a single Indian is there. Okay, so like you can put the data like substantiate answer by giving the 20 lakhs or the 5 lakhs like all this or let's say more than 10 lakhs people or the Indians is also living in the London as well. So these are the data you have to substantiate your answer. Then से कोई ची सेमने strategic impulse करे ना strategic impulse रो meaning कौन ताको हमें discuss करेगा. When I say strategic impulse तार meaning कौन ताको हमें जानियो बहुत जरूरी. तार meaning होची इकोनॉमिक पावर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पावर देन ऑल. तो जेते तमर सीईओ सब रही ना चाहे से सुंदर पिचाई कथा लेख सत्य नादाला कथा लेख ये समस्त तुमको लिखा पड़ो है ना कि तुम जब स्पेसएक्स रे कहीं काम करुच्ची तुम लिखिपार. दैट्स ए इंडियन इवेन
द इंडियन आम कह ऑरिजिन देख इंडियन ऑरिजिन इज डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन डायस्पोरा ओके एमती ना कि जमती बहुत सारा डिबेट चला कि रिसीसन है ना हाँ सेटा कही परिबा हम सॉफ्ट वर्जन डिस्कस करबा ऋषि सनक जेतले पीएम हेगले इंडिया न्यूज चैनल रे एते डिबेट हैला जेमति कि इंडिया रो लोकटा ही जाई पीएम अरे प्रथम कथा से तो इंडियन नुह से तो सेठिकर सिटीजन बुझी पारछ नहीं तो एई भले जो बायस करबो नहीं हाँ तुम्हें कही पर हाँ दैट वुड बी ए सॉफ्ट पावर दैट डज नॉट मीन से इंडिया से तो इंडियन नुह ना जा भी हो तो आमर सब्सटेंशिएट कले देन आम आसबो कि स्ट्रेटेजिक इम्पल्स कौन देख एमाने होचंती ना जो माने भी यूएसए रे रहउचंती इंडियन they are all educated entrepreneur or skilled लोक आम कहीपर either they are skilled से माने इकोनॉमिकली बहुत साउंड कारण इकोनॉमिकली साउंड हेले ही तमे पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करि परिबो जति कि सीईओज अछंती ना अमेरिका रे दे आर इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसी ऑफ अमेरिका आ गोटे मु प्रूफ करूची जो देश रे इंडिया दोज कंट्रीज हैविंग स्ट्रांग डायस्पोरा ऑफ इंडियन with that country we are having good relation. For example, USA we are having 20 lakhs people, that is why good relation. We are having good people with Britain or the UK, we are having good relation. We are having good diaspora with Australia, we are having good relation. We are having good relation with New Zealand because of diaspora. That means फ्रांस कथा नहीं जाओ जर्मनी कथा नहीं जाओ तो जोठी इंडियन रोचंती अधिक सेमानक सहित आमर बेस्ट ईदर दे आर द बेस्ट पार्टनर ऑफ इंडिया दे आर द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया और दे आर वन ऑफ द नेचुरल पार्टनर ऑफ इंडिया ये आम कहीपर दैट इज वाय से प्रूफ होची जोठी डायस्पोरा होची सेठी भल रिलेशन अच्छी आउ सेठी हमको जमती यूएसए सहित आमर कौन स्ट्रेटेजिक रिलेशन अच्छी फ्रांस सहित स्ट्रेटेजिक रिलेशन रो मीनिंग होची इकोनॉमिक प्लस डिफेंस ये मीनिंग तार दैट मीन्स जदि एमाने जदि प्रत्येक देश जदि इंडिया को फॉलो कले जेहेतु आज द यूएसए रो जो इकोनॉमी आम कहबा दैट इज बीइंग रन बाय द इंडियन obviously they will influence while the US government will make policies while making the policies in USA I would say they will have the implication obviously they will influence कि the policies is being made in USA that should have some sort of tiltation towards the India so the India will get benefit that means से ही India को help करिवो India रो growth पाई होप यूर गेटिंग मी इंडिया को ग्लोबल पावर ताले यूएसए केमिति यूएसए कहबे इंडिया यूएनएससी रो मेंबर हो ना कहबो नेबे दैट मीन्स जदि इंडिया रे कना नले वोट बैंक पॉलिसी ना तमे भी जानि छ इंडियन माने वोट देबे सेठी सो दैट दे विल आल्सो विन द इलेक्शन है ना दैट मीन्स सेथि पे यूएसए केबी भी मना करि परिबनी कि इंडिया यूएनएनएससी रो मेंबर न हो यूएनएससी रो मेंबर न हो बोली इंडिया कहि परियो कि यूएसए केबी कहि परिबनी सेथि पे यूएसए सपोर्ट करिया पे बाध्य यूके सपोर्ट करने बाध्य आमको यूएनएससी मेंबर हवाई परमानेंट मेंबर बुक हो G20 आज जदि G20 इंडिया रे होची कोन पई बिकॉज ऑफ इंडियाज डायस्पोरा सपोर्ट एंड रेमिटेंस कथा तमे तापरे से तमे रेमिटेंस कथा नहीं छो दे आर पुटिंग सो मच ऑफ रेमिटेंस आ ये रेमिटेंस न थिले इंडिया रो जो डॉलर जो आसुची तुमको है ना यू आर गेटिंग डॉलर्स आउट ऑफ दैट तेणु करके इंडिया रो इनकम भी होची एम्प्लॉयमेंट आसुची यूएई कथा नहीं जाओ यूएई सब बेस्ट एग्जांपल भाव मुस्लिम कंट्री सहित आम रिलेशन भल न था बट वी आर हैविंग गुड रिलेशन विथ यूएई कौन पे बिकॉज ऑफ डायस्पोरा से दो पाकिस्तान इवन पाकिस्तान इज नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस द यूएई कि इंडिया सहित भल रिलेशन रख ना कौन पे बिकॉज ऑफ द डायस्पोरा सो नाउ इट्स प्रूफ कि वेयर एवर वी आर हैविंग द गुड डायस्पोरा वी आर हैविंग द गुड रिलेशन होप यू आर गेटिंग मी तेणु करके इंडिया को and India को ये माने मना करि परिबा नहीं and this country well formulating their foreign policy जेतोल सेमानकर foreign policy करिवे they will keep in mind always India कथा से माने सुनिबे and Indian diaspora कथा सुनिबे otherwise they would be in the losing side रहिबो तेणु करिकी ये रहिबो हमरो तो क्वेश्चन कोन रहिबो that means हम कहबा we are having lies diaspora and they are skilled they will influence the policy making of that particular country for example मु कहबी यूएनएससी कथा नहीं जाओ आज G20 कथा तमे नहीं जाओ these are the influence is reflecting तमे सीईओज कथा नहीं जाओ जेते बड़ सीईओज कथा लिखि दियो सेमन को ना लिखिबो इवन रिसीसन कथा भी तमे एग्जांपल दे पारो दो is not Indian but having the software over there so okay तो ये हाँ एफडी को सेटा देखो एठी हमें डायस्पोरा कथा है ना
So these are the things we have discussed in a detailed way. Hope you are getting me. है ना? अच्छा समस्त को बुझा पड़ुछ एबे आंसर केमती ही परबो केमती डायनामिक. So these things are dynamic and for this na you have to be updated. ତେଣୁକରି ତୁମକୁ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ. ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଲେଖିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ. ତୁମକୁ ୟୁ ଉଡ୍ ବି ଲାଇକ୍ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଲେସ୍ ହେଇଯିବ. ତୁମେ କ'ଣ କେଉଁଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କେଉଁଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା. ଦେର୍ ଉଡ୍ ବି no I would say what starting point and ending point would be always difficult. So we need strong diaspora. ତେଣୁ ଯେଉଁ diaspora ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି. କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଟୁ ଦେମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ହାଭିଂ ହ୍ୱାଟ୍ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତ ଦିବସ ନା ନାହିଁ. ପ୍ରବାସୀ ଭାରତ ଦିବସ କରାଯାଉଛି. ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଲେଟ୍ ସେ ଆର୍ବିଆଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଅଧିକ ଦେଇଦିଅ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ମନି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ. ହଁ କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ ଅଧିକ କରିବେ. ତ ଏସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦିଆହେଉଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କୁ ବି ଲାଗିବ ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଲସୋ ଲୁକିଂ ଆଫ୍ଟର ଅସ୍ ଅର୍ ଦେ ଆର୍ ଅଲସୋ ସପୋର୍ଟିଂ ଅସ୍ ଆୱାର କଜ୍. ବୋଥ୍ ୱେରେ ରହିବା ଦରକାର. ସୋ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍. ହୋପ୍ ୟୁ ଆର୍ ଗେଟିଂ ମି. ହେଇପାରିବ ଏବେ everyone? So like this would be our approach. ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କୌଣସି ଡିସ୍କସ୍ କରିବୁ ଯେଉଁ ଜିଏସ୍ ତମ କାଲିଠୁ ତମର ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ କ୍ଲାसेस ହେଇଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଏନରୋଲ୍ କରୁଛ. Geography optional test already ମୁଁ conduct କରିସାରିଛି. Geography optional is being conducted by me and it's been like what more than 7 years I have been teaching geography optional for the OPSC aspirants. So test number 1 is it was conducted yesterday. So if anyone is raising the question, you can also directly you can either send a drop a message to Purushottam sir, Lali sir, or to me. You can personally also drop a message to me as well. Okay, so now we will comes to the next question. See, this would be the next question, but this is not but this would not be, I would say I will discuss only 4 to 5 questions. I don't know, matlab I was just having a class just before your class. I was going through the optional class, so just within 10 minutes I have to sit back again as the Purushottam sir is quite busy over there. So that's why there was no plan to sit back with you guys. I didn't had a plan. So it was suddenly I have to change the mind and with you. So let it be. So I will go through this one. Now this one, explain the fiscal policy of Government of India that can play the positive role in COVID-19. Now see, I have circled the word. Fiscal policy of Government of India, positive role during the COVID. So now I will ask the question answer from your side. I will discuss obviously, no doubt I will discuss it. Rajesh, please don't make a call right now. I am in class. If you are watching me. Anyone, could you please put forward your answer? Then I will discuss. Definitely, I will comes to my answer. Anyone? Anyone? One by one. Okay. Fast kiye kouthilo? Okay. Anyone else who was talking? Fast kiye kouthilo? Tame ko je kouthili. हाँ. हम्म. 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 नहीं 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 आगे क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को आगे देखो. नहीं 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 नहीं. हाँ. हम्म. ओके. ठीक है. नाउ आई विल कम टू माय आंसर. यस. Now, as I said in the beginning, you have to first circle the word. Now, you have not got that word. What question is exactly asking? Question is asking the fish. Yeah. No, no.
We can, obviously, I'm not denying your facts which is added by you. Now I'm coming and see. First is explain. Se kuch explain the meaning kono. Explain means elaborate. When I say explain, you have to elaborate. Elaborate the fiscal policy. That means you have to talk about, discuss that one. Okay, what was the fiscal policy? The fiscal policy was expanding or expansion, or I would say what? Expansion fiscal policy. It was not contraction, it was expansion fiscal policy, isn't it? या थिला ना रेपो रेट को आमे कौन कले कम कले रेपो को लेट्स से आमे एसएलआर भी कम कर देले हाँ कि नहीं सीआरआर भी कम कर देले हाँ कि नहीं सो फिस्काल पॉलिसी रे कौन आसुची सेटा मते दरकार सेटा तो तमे डेविएट होचो ना मते दरकार फिस्काल पॉलिसी वाट लिखि देछि बस ए फिस्काल पॉलिसी तमे लिखिबो रेपो कथा एसआरआर कथा लिखिबो सीआरआर कथा लिखिबो दिस थिंग आई नीड तो दीज आर द थिंग्स को कमै देले दैट मीन्स आमे कोन एक्सपांशन कले एक्सपांशन व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी दैट मीन्स फिस्काल पॉलिसी को आमे कोन ओपन कर देले कहले ठीक अछि आगे लोक बंची जाऊ लोकन पाखरे पैसा थाउ बुझि परछन बुझि परछन लेट द पीपल टू गेट द मनी है ना एबे आमे करि परिबा नाही तेणु करके गवर्नमेंट कोन कले ओपन हैंडेड हे गले आरबी एंड द गवर्नमेंट आमे कहबा ओपन हैंडेड हे गले स्कीम कर देले दैट मीन्स हम फिस्काल पॉलिसी रे कोन देखले रेपो रेट हे जो कि एसएलआर हे जो कि सीआर हे जो ये सब कोन करले ओपन कर देले कि ठीक अछि जति की भी हमर फिस्काल डेफिसिट हवा कथा हेउ आगे लोक बंचंतु अदरवाइज ना तो फास्ट जो कथा तमे कहलो सो दैट पीपल विल गेट द लोन लोक माने कोन करबे लोन आने से लोन रो कोन करबे छोट मोट बिजनेस करबे कि बंचिबा दरकार ना कारण ए समय रे जदी तमे फिस्कल पॉलिसी को टाइट कर देबो सो दैट तमर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हे जो पूरा सो वी नीड टू हैव एटलीस्ट ए व्हाट एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी एबे ओपन थाउ देन आफ्टर द कोविड जेतरे मार्केट पूरा ओपन हे जबो देखो एबे ताले आरबीआई कोन करूची कंट्राक्शन मॉनेटरी पॉलिसी कौन पे ना एबे मार्केट ओपन हो जाइए तेणु लेट द एबे इन्फ्लेशन बढ़ी जाइए तेणु जो मनीटा जिते एबे इन्फ्लेशन बढ़िबार कारण है सेतेबेले आमे एक्सपेंशन पॉलिसी करके रखितले सेतिबे इन्फ्लेशन बढ़ी बोली एबे लास्ट देख 5 मंथ्स हेगला 6 मंथ हेगला आरबीआई खाली इंटरेस्ट रेट को बढ़ाऊँगी 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 सीआरआर बढ़ाऊँगी एसएलआर बढ़ाऊँगी हाँ कि नहीं এইଥିପାଇଁ दैट मीन्स आम कह जो कोविड टाइम रे प्रथम तो एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी थिला से कहछि पॉजिटिव रोल ऑन कोविड एथिପାଇଁ पॉजिटिव जोटा तुम माने कहलो लेट्स तो कोविड रिलेटेड वैक्सीन कथा नहीं जो लेट्स से तुम कहलो कि पीपी किट कथा नहीं जो है ना ये पीपी किट कथा में नहीं जबा और आमे लेट्स मेडिसिन कथा जहाँ भी तुमरो तुमरो मेडिसिन दरकार थिला मेडिकल इक्विपमेंट आमे कहबा जिते भी इक्विपमेंट थिला ताको आमे कहबा देन आमे फूड कथा नहीं जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कथा नहीं जाओ है ना किंबा जो भत्ता फत्ता दिगला से टाइम रे जो एक्स्ट्रा फूड ग्रेन दिगला अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सेटा भी एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी रे आसी जिवो हाँ कि नहीं सेटा भी आसे फिस्कल डेफिसिट कोन हो तुम बढ़ी जीव भेरियस गवर्नमेंट स्कीम बहुत बढ़िया जो सुब्रत पुट फॉरवर्ड करिछ त भेरियस स्कीम सब गवर्नमेंट जहाँ जहाँ करिछि से समय सब स्कीम को तुम लिखिबो पॉजिटिव रोल ताले पॉजिटिव रोल कोन ना हमर जोटा प्रोडक्शन रे हेल्प करिवो अदरवाइज लोक प्रोडक्शन करिवे केमती प्रोडक्शन रे हेल्प करिवो एंड लाइफ को सेव करवा पोवर्टी न बढ़ू कारण यही टाइम रे जति आम स्कीम न करवा जमी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना होगा अदरवाइज आमर जो पोवर्टी अच्छी से ना स्काय रकेट हो लोक न खाई मरवे तेणुक आम पाखे किसी ऑप्शन नाला चाहे से इन्फ्लेशन बढ़ू बट लोक बंची जातु आगे so that was the agenda of the government and that played a positive role कि we could save the peoples the positive role was that we could save the people we could maintain the what employment unemployment तो कहबेनी employment कारण जदि मु एक्सपेंशन पॉलिसी जदि मु इंटरेस्ट रेट लो रे न देबी समस्त को चाकरी बाहर कर दो सब जेते कंपनी अछि प्राइवेट कंपनी समस्त को चाकरी बाहर कर दो सो दैट एम्प्लॉयमेंट बढ़ी जिवो तेणु करके पॉजिटिव जिंस या थिला जेहेतु इंटरेस्ट रेट लो थिला तेणु एम्प्लॉयमेंट भी हमर एते भी तल को खसी नथिला जेमति कि बाकी कंट्रीज रे देखाइथिला दैट मींस आमे एम्प्लॉयमेंट कथा लिखि परिबा लेट्स से मु कहबी एम्प्लॉयमेंट ठीक ठाक थिला पोवर्टी जहाँ भी आमर देख कौन से गोटे लोक तुम शुणिन कि न खाई मरी दैट मीन्स नन ऑफ द पीपल इन इंडिया डाइड बिकॉज ऑफ द हंगर और व्हाट आई वुड से स्टार्विंग से सेमती किसी देखा जाए ना देन एम्प्लॉयमेंट कथा देखले बा आमे जो कंपनीज थिला जो जिते भी तुम कंपनीज थिला से सटडाउन करी नाहंती नले इंटरेस्ट रेट बढ़ाई से सटडाउन करदेवे है ना आउ तुमको जोटा कहल जमी मोराटोरियम दि जाइए
ये सब तुम जहाँ भी पॉलिसी चाहे से मोराटियम हो जाओ चाहे से लोन छाड़ हो जाओ जहाँ भी तुम लिख सो दैट आम एम्प्लॉयमेंट जनरेट होची एंड गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन ताको भी आम भूलवा ना गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन ना कमिज गुड्स एंड सर्विस जो प्रोडक्शन कमिज ना ओबियसली प्रेसर पड़ गवर्नमेंट उपर इम्पोर्ट हो पुणी तेणु ये सब जिनस को तुम गोटे सिस्टमेटिक वे लिखार अच्छी होप नाउ आई हैव सैटिस्फाइड यू गाइज देन एवरीवन yeah move ahead भाई फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी तो हेले ही फिस्कल पॉलिसी बजेट मॉनेटरी पॉलिसी को मु जदी वीक कर देबी तो ऑब्वियसली फिस्कल पॉलिसी टा से ता पर इंपैक्ट पड़िबनी तो कारण एक मिनट जदि ठीक लिंक करी हबो कि बस ए तमे कहया କଥା कि whether we can link or not ओके देख प्रथम कथा जो फिस्काल पॉलिसी अर्थ कौन माने टोटाल एक्सपेंडिचर को बढ़ाई देवा गवर्नमेंट रो एटा होची फिस्काल पॉलिसी बट ताकू एथि मु ऐड कली टिके ताकि गवर्नमेंट खाली गवर्नमेंट साइड रू जदि आम देखा ओबियसली से तुम कहीपर कि आम मैक्सिमम पार्ट जब आम फिस्काल पॉलिसी स्पेंड करवा भल हम रादर देन द मॉनेटरी पॉलिसी मतलब यू आर ऑल्सो पार्शियली करेक्ट मुझे कहूनी कि मतलब तुम गलत बट आम से लिखिपर कि कौटि ना कौटि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करुँच आरबीआई को कहते ना गवर्नमेंट भी तो तुम जान आरबीआई जो आम मॉनेटरी पॉलिसी 3:3 दैट मीन 3+3 मेंबर थाए तो से मैंने भी ना कौटि ना कौटि गवर्नमेंट कहती कि आप वीक करूँ आम भी आम आड़ू करुँ आप भी आप आड़ू टे करूँ ना आम उपर सब बर्डन पड़ो बुझीपार नहीं तेणु किसी आपण आड़ू करूँ आम कि स्कीम वगैरह करी फिस्काल पॉलिसी आमर वीक करदेव कहीं ओबियसली तुम जान फिस्काल पॉलिसी आमर कौन आमर फिस्काल डेफिसिट के रहा दरकार 3% जदि आम देखा है ना 3% अधिक न हवा दरकार फिस्काल पॉलिसी एफआरबीएम एक्ट कौन के जो तुम एफआरबीएम एक्ट 2003 है ना जहाँ आम बारंबार आमेंड करें एफआरबीएम एक्ट को 3% रु अधिक न हवा दरकार या तो है ना तो जहाँ भी हो एबे आमर किंतु आम करवा कौन जोटा तुम कह ठीक अच्छे मॉनेटरी पॉलिसी को कम लिख फिस्काल पॉलिसी को अधिक लिख है तो तुम जब देख तो आमर जो टार्गेट थिला सेटा तो बारंबार आमेंड करें तो एबे भी तुम देख फिस्काल पॉलिसी आमर वीक नहीं थे एथि गवर्नमेंट स्पेंड कर गवर्नमेंट जब टी टाइट करदेव ना तो पोवर्टी बढ़ीज अनएम्प्लयमेंट बढ़ी लोक खाया पाइबे खर्च हो पारनि तो ठीक अच्छे ना लोन बढ़ीज ना बढ़ी जाऊ लोन लोक बंची जाऊ तापर आम लोन चुकईदेवा कौन अच्छी है ना लोन बढ़ फिस सो एफआरबीएम एक्ट जब तुम लिखिपर जब कहार मन पड़ा एफआरबीएम एक्ट लिखिद फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट 2003 अनुसार के 3% रहा दरकार है ना हाँ नहीं ठीक है वेरी गुड इवनिंग नहीं मोस्ट सर नहीं नहीं सेटा मु कहली हाँ तो हो ठीक अच्छे हाँ हाँ ठीक अच्छे एंड हाँ ठीक अच्छे तो मो कंक्लूजन है ना सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर वैल्यू एडिशन सो दैट मीन्स यू गाइस आर ऑल्सो अवेयर है ना जोटा मु तुमको कहली कि आरबीआई रो जो मॉनेटरी पॉलिसी बा मॉनेटरी कमिटी थाए से 6 मेंबर थाए जो थे 3 मेंबर आरबीआई रु थाए
थ्री मेंबर गवर्नमेंट साइड रू था एटा समस्ते जानिछ आरबीआई रो मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी कमिटी तो मु जो कथा टिके कहितली तमे लिखि परिबो देखो एथरे किछि हबनी बोथ यू आर राइट एमते नै कि मतलब है ना टिके हमें लिखि परिबो मॉनेटरी पॉलिसी लिखि परिबो किछि असुविधा हो है ना किछि हबनी डोंट वरी डन अरे बोले हेल्दी डिस्कशन होछि ना दैट्स ग्रेट ओके फाइन हां very 100% no doubt because they are suddenly they are also having repercussion or the implication on the fiscal policy of the total fiscal policy of the government even I am saying the revenue deficit कथा नहीं जाओ fiscal deficit भी बढ़िबो ता द्वारा revenue deficit भी बढ़ुची बुझि परछ नहीं एंड प्राइमरी डेफिसिट भी बढ़िबो यदि तुम माने पढ़िथिबो प्राइमरी डेफिसिट भी बढ़िबो फिस्कल डेफिसिट भी बढ़िबो रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़िबो एवरी सो पूरा तुमको ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्पेंड करते फिस्कल पॉलिसी रे तो इंपैक्ट पड़िबो ना है ना इधर किछि डाउट नहीं यू कैन राइट ऑल द स्कीम्स एंड पॉलिसीज व्हिच आर फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग द कोविड दे आर द पार्ट ऑफ दिस आंसर इधर किछि भी डाउट नहीं 100% करेक्ट गॉट एवरीवन okay now we will comes to the regional disparity okay now we will discuss this question I'm also very happy to discuss एते किछि ना तम मानको भी किछि जणा थिले ना डिस्कस करे पे भल लागे otherwise it would be like मुते लागो कि यार they are not getting me so I'm also happy to and glad that you guys are also our people thank you so hope you are getting me everyone है ना so let's move on now we will come to the regional disparity are having any query we will talk after this question है ना एक क्वेश्चन पर हम डिस्कस करू तमन को जार जार डिस्कस अछि anything having any queries and a doubt we will talk about after this question so now comes to this question so give a brief outline of the regional disparity now first I have circled the regional disparity first I have circled what regional disparity what then Odisha that means regional disparity in Odisha so and the policy measures कौन कराई बस तीन टा ही टोटल तो दीटा रीजनल डिस्पैरिटी ओडिसा रो पॉलिसी कौन okay do you suggest that means लिखिछि do you suggest for the balance regional development तमर निजर सजेशन कौन what policy measures do you suggest ताले हमें कहबा तमर एटा हमर पचारछि that means from the students okay अच्छा तमर निजे तमे मो कहया कथा जेतरो से कहूची do you suggest for a balanced regional development प्रथम जेते बेले एई भलिया दैट मींस पर्सनल ओपिनियन तले आप हमें कहबा पर्सनल ओपिनियन ध्यान से मन करो जेते बेले एई भलिया क्वेश्चन आसे पर्सनल ओपिनियन प्रथम कथा वी आर मतलब you are not in a place to take your person as the strongest your opinion as the strong opinion तो always put the opinion of a scientist हे जो और कौन से गोटे इकोनॉमिस्ट हे जो और कौन से गोटे एमपी कहिसंती एमएलए कहिसंती निजर ता भितर गोटे दीटा निजर एमती नाही कि 10टा जाक सजेशन निजर लिखि दिछ माई 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 नाही अकॉर्डिंग टू हमको अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट कोन करिसंती कौन से जने साइंटिस्ट किसी कहिसंती बा केबे तमे को थ्योरी पढिछ रीजनल डिस्पैरिटी को केमते रिड्यूस करा जिवो दिस थिंग यू हैव टू ऐड नाही कि निजर पर्सनल ओपिनियन सब ऐड करिवो होप दिस इज क्लियर टू ऑल है ना सेतरे तमे केबे भी ताको भाबिबन कि पर्सनल कहिछि से मोर ही सब देबी पर्सनल सेमति किछि वेनी बिकॉज़ यू आर मतलब आई बिलीव कि यू आर नॉट इन दैट स्टेज टू टॉक ऑन दैट बुझि परछ सेतरो ट्रेनिंग पाइला पर तमे कहि परिबो तुमको लागिवो कि सर इज अंडरमाइनिंग आवर टैलेंट नो आई एम नॉट अंडरमाइनिंग योर टैलेंट है ना तो सेटा परे हिजबो हमको लागे वी आर बहुत मैच्योर बहुत एनफ मैच्योर बट सेटा हमको लागे बट कोट ना कोटी भूल हिजबो तेणु करके मुके it would be better to restrain ourselves and from my side or from your side put forward 2 to 3 points rest of the point bring from the government policies प्रथम कथा regional disparity अच्छी बोली तो आगे प्रूफ करो you have to prove the regional disparity yes Odisha is having this regional disparity then आमे मेजर कथा को आसीबा so that means amaro dita section re answer divide habo first part of the question answer you have to prove ki yes there is prevail the regional disparity is there then second part or suggestion how to remove or how to have the balanced regional development now that means regional disparity re jedi tame chaibo ko sir whether we can put forward the causes little bit tame add kari paribo in short कोटे माने डायग्राम टाइप वगैरह किसी ऐड करके जैसे टाइप यू कैन आल्सो पुट फॉर द कॉजेस दो द कॉजेस इज नॉट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन यू कैन पुट फॉरवर्ड see
This one is the open-ended question. You can put forward. Let's see the regional disparity. The regional disparity को sense रे करूँ social, economical and political. ध्यान से सुनिबो जेतेबेले भी रीजनल डिस्पैरिटी को आज सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तुमको सर सोशल बट लाइक एजुकेशन हाउसिंग हेल्थ क्लोथेस ऑल दिस थिंग्स सोशल लेट्स से पर कैपिटल इनकम कथा नहीं जाओ ना इकोनॉमिक पर कैपिटल इनकम ऑफ कटक भुवनेश्वर पुरी दिस पीपल इज टू हाई आज कंपेयर टू द केबीके रीजन और आई वुड से द मालकानगिरी केउझर मयूरभंज ऑल दिस पीपल इकोनॉमिक मु कहूँ पर कैपिटल इनकम एमानकर एक्सपेंडिचर अधिक एमानकर हाउसिंग भल कोस्टाल एरिया कथा जदि आम देखा सो प्रथम कथा रीजनल डिस्पैरिटी ओडिशा रे देखा जाउची कोठी द बॉर्डर रीजन ऑफ ओडिशा द बॉर्डर रीजन ऑफ ओडिशा एंड द हिली रीजन ऑफ ओडिशा ध्यान से सुनियो हिली रीजन जमती कंधमाल कोरापुट हिली रीजन बॉर्डर रीजन एंड कोस्टल रीजन एंड व्हाट कोस्टल रीजन डज नॉट मीन्स कि पूरी coastal region means I would say like Bhitarkanika, like the village surrounding Chilka, the village of let's say any other region like Brahmagiri Higala, all this region I am talking about. That does not mean I am talking about Paratip, Puri, all these things. Okay, so that means regional disparity जदि हमें देखिबा ओडिसा रे I will point out के coastal region is a potential area, the hilly region is another potential area, and the border region. These are the regional disparities prevail in this particular region. So first of all, if you can draw the Odisha map, you can also draw the Odisha map and put forward that yes, these are the regional disparity is prevail in this particular region of the Odisha. You could put forward like this. Hope you are getting me. तमें प्रूफ करिबा कि हाँ these are the reason is regional disparities prevail. So आगे तमें सेमती करते लो को बेसिस रे सोशल कले जमती मुकले एजुकेशन कथा नहीं जो जमती है ना मैरिज कथा नहीं जो लोक ने चाइल्ड मैरिज करछंती सेपटे तो एठी तो 30 इयर्स रे पिला मैरिज करू नांते पटे हां तो सोशल इश्यूज रे तमर कोन आसी जबो मैरिज कथा नहीं जो फॉर एग्जांपल तुमे एजुकेशन कथा नहीं जो देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट कथा में नहीं जो है ना देन आमे कोन कहबा मैरिज कथा नहीं पर सोशल इश्यूज आ पोवर्टी तम नहीं परिबो पोवर्टी एज द माल न्यूट्रिशन वेस्टिंग स्टंटिंग दीज आर द सोशल इश्यू होप समस्त सोशल इश्यू जानी छ देन इकोनॉमिक इश्यू कसिबो पर कैपिटल इनकम ओके दैट मींस हमें कोन पर कैपिटल इनकम कथा नहीं जबा नहीं परिबनी हे परिबो एक्सपेंडिचर हे पर एक्सपेंडिचर हे परिबो नहीं रोड हे परिबो रेलवे हे परिबो एयरपोर्ट हे परिबो दैट मीन्स दीज आर द इंडिकेटर जदि तुमको कटक भुवनेश्वर बहुत बढ़िया रोड अच्छी बट सेठी रोड नहीं सेठी मेडिकल नहीं सेठी कॉलेज नहीं सेठी भलो कौन आम कह बस स्टैंड नहीं सो दीज आर द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर आम इकोनॉमिक रे पुट करदेले तो ये सब को देखे कि हमें कहे दिस इज द रीजनल डिस्पैरिटीज हाउसिंग भलो नहीं है ना कम्युनिकेशन नहीं सो दीज आर द डिस्पैरिटी इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल तुमको सर पॉलिटिकल डिस्पैरिटी कौन रिप्रेजेंटेशन ताको हमें कौन कहबा रिप्रेजेंटेशन अरे ट्राइबल लोक भी तो रिप्रेजेंटेशन पाइबा दरकार एससी भी पाइबा दरकार एसटी भी पाइबा दरकार अदर डाउन ट्रोडन सेक्शन पाइबा दरकार सो दैट कौन पारिटी आसीबो इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल स्फीयर रे खाली कौन आम पारिटी आनिबा सोशियो इकोनॉमिक रे पॉलिटिकल रे आनिबानी लेट द पारिटी टू बी एस्टाब्लिश इन ऑल स्फीयर ऑफ द सोसाइटी ऑल स्फीयर ऑफ द है ना आम कहवा पूरा गवर्नमेंट रो जेते स्फीयर अछि सबुथिरे पारिटी आगे डिस्पैरिटी देखैतलो दिस आर द देन आसो मेजर्स कौन अच्छा मेजर्स को तुम माने तो पढ़ी जो बहुत पढ़ी दबो ना मेजर्स कौन कहबे व्हाट आर द मेजर्स इज टेकन कौन हे परिबो okay health infrastructure if you could put forward any kind of scheme at let's say the any expenditure government has given or some sort of any data you could put forward when you are saying ki health infrastructure we are focusing on health infrastructure you are right I am not talking about these things but yeah I am saying ki whether you can substantiate your answer. You are saying ki sir, we are focusing on the health sector, like health infrastructure in terms of the medicals. Let's see, you are putting it. You are put forwarding that one. So you have to substantiate. Yeah. हाँ. कौन आएगा? Anyone? ठीक अच्छे मैडम कहल तुम कौन हाँ मेडिकल ओके मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यू आर पुट फॉरवर्डिंग दैट इज द इंफ्रा
मेडिकल इनफ्रा सो मेडिकल इनफ्रा इन टर्म्स ऑफ तुम लेट्स से तुम कह सर ठीक अच्छे आमर एबे जेते आमर जो कौन कहे एमान को कौन कहे आमर जो ये जो छोट छोट मेडिकल गुड़ा घर पाखे समस्त थाए कौन थाए एमान कौन कहते हाँ हाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बास तुम यहाँ कह ओडिशा गवर्नमेंट आम कह अरे गवर्नमेंट को टिके टेकी दियो ना अरे नवीन बाबू को खुश कराइबन ना कौन तुम कहीदियो कि जिते आमर पब्लिक हेल्थ सेंटर अच्छी से सब को रिनोवेट करा जाउची ताकू तार कौन हो ताकू बहुत सारा अच्छा आमर डिस्ट्रिक्ट लेवल रे मेडिकल कॉलेज करा जाउची ओडिशा रे बे हाँ कि नहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल रे एटा को हेई परिबो जोटा एबे जो मैडम एबे कहउथिले है ना यू कैन आल्सो पुट फॉर कि यस सर वी आर नाउ फोकसिंग ऑन द डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर रोची सेठी हमरे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल रे एटलीस्ट 5टा 10टा कौन गोटे नंबर अच्छी मोर मन पड़ुनी एटलीस्ट 35 सीट कौन मेडिकल स्टूडेंट सीट करा जिवो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रे 35 ना केते स्टूडेंट गोटे सीट्र गोटे मेडिकल कॉलेज हम सबुथिरे एटा गोटे कहीपर जिते पीएच अच्छी से रिनोवेट करा एंड फैसिलिटीज कराऊँ कोविड टाइम बहुत बढ़िया फैसिलिटीज देते तो मेडिकल कहीदेल सेमती तुम जब रोड कथा कह तुम देख सबू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को स्टेट हेडक्वार्टर सहित कौन करा कनेक्ट करा डिस्ट हेडक्वार्टर को स्टेट प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना कथा लिखिपर भारत माला कथा लिखिपर ना लिखिपर लिखिपर ना तो इनफ्रास्ट्रक्चर लिखिपर आउ कौन रिजनल डिस्पारिटी तुमर वेस्टर्न डेवलपमेंट काउंसिल अच्छी रही टे रही मुझे सारे वेस्टर्न डेवलपमेंट काउंसिल अच्छी रिजनल डिस्पारिटी को सेटा तुम लिख देन बिजू कौन गोटे स्कीमटा अच्छे मोर मन पड़ूनी जो आमर रायगड़ा एंड कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में गोटे से दियंती 1 करोड़ दियंती प्रत्येक वर्ष हाँ तो तापाई 1 करोड़ प्रत्येक वर्ष दि जाए देन तुम जोटा कहली वेस्टर्न डेवलपमेंट काउंसिल कथा नहीं जाओ केबीके योजना कथा नहीं जाओ प्लस है ना ये सब तुमको ये जो स्कीम अच्छी ता व्यतीत तुमर निजर पर्सन दीज आर तो तुम गवर्नमेंट देन तुम निजर भी लिख 5टा ना खाली गवर्नमेंट थोड़ी लिखा निजर लिख कि तुमर निजर कौन लगे पर्सनाल ओपिनियन को आसवा आम गवर्नमेंट खत्म पर्सनाल आउ से तुमको डिस्पारिटी इंदिरा आवास योजना दि जाऊँगी ड्रिंकिंग वाटर दि जाऊँगी ड्रिंकिंग वाटर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय 2022 समस्त को हर घर जल हर घर बिजली चाहे से हर घर ये सब लिखिदेव तुम चाहे से बिजली हो चाहे से गैस हो पहाल हो कि तुम रोड हो चाहे से भारत माला सागर माला अमुक ढमुक जहाँ अच्छे सब लिखिदि उड़ान योजना कथा लिखिदि उड़ान योजना रे सेटा भी तो तुम रेलवे एयर कनेक्टिविटी होची ना होनी ताकू भी तुम लिख सो दीज आर द पुट गवर्नमेंट लिख तुम लिख तुम केमी लिख कि सर ए लॉट्स ऑफ मेजर इज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट दे आर लाइक दिस लिखला देन अकॉर्डिंग टू मी अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड ऑल्सो लाइक टू आड द सम ऑन माय पर्सनल व्यूज तापर तुम पर्सनल 5टा पॉइंट लिखि गवर्नमेंट भी होगा तुम होगा खत्म आंसर होप यू आर गेटिंग इट सो दिस इज द वे टू राइट द आंसर हाँ एबे कौन के कहया कथा को See, one thing, first of all, critical examine is not added into the questions. So, as the critical word is not added into the question, I would not criticize the government. Had it be the like critically analyze the regional disparity in Odisha, then I would have liked to prefer that one, or I would have raised your issue over there. As it's not mentioned, so I would not go or I would not entertain that part. Hope you are getting me. Uh-huh. See, no. I see. When I was talking about the coastal region, I specifically I was pointing out to the Chilka, the surrounding region. Let's say the U, and I was specifically I pointed out to the Vitarkanika. तो वो specific करी ना. I am not talking about the whole coastal plain. I am talking about the coastal villages. Migration होची सेठी. Sea erosion होची. Even तमें सुनी तो BBC रे देखिवो कि ब्रह्मगिरी केतेटा गाँ से समुद्र मिसी जी. Still they are having पट्टा. ସେମାନଙ୍କର ପଟ୍ଟା ଅଛି ବଟ୍ ଜମି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ so they are migrating so migration ତ ଦେଖାଉଛି ନା disparity ତ ଦେଖ that could be the climate induced ହେଇପାରେ but I am not talking about all the coastal region is having regional disparity I am specifically pointed out କରୁଛି hope you are getting me
See, law and order problem, I would not add into this point because of the what regional disparity. I have to stick to the point. I would not go into the law and order issue. Hope you are getting me.